सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं? मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे और दूसरों को देखने की तलक़ीन भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी पहचान है और इसमें हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें और आपको बता सकें कि उन्होंने इस मुल्क में कितनी मेहनत की, कितनी तगदौ की और आला मुकाम हासिल किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें कम्युनिटी कवरेज भी होती है, मुख्तलिफ सोशल राउंडअप्स होते हैं ताकि आपको ये पता चले कि मुल्क में हो क्या रहा है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी भरपूर है। आज कोई खुसूसी मुलाकात नहीं है, लेकिन छोटे मोटे इंटरव्यूज़ हमने शामिल किए हैं। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। आज 65 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान में अभी तक कोई मुस्तहकम सियासी प्लेटफार्म नहीं बन सका है। मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, उन्होंने अपना मतलब निकाला और चल दिए, लूटा, रॉब किया कंट्री को, तहस नहस किया, अपना मतलब निकाला और चले गए। इस आवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने, जो कि मासूम अवाम है जिसको मैं कहता हूँ, उसने हर पार्टी को मौका दिया कि वह आके हुकूमत करे और उनके मसाइल हल करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर पार्टी इसमें नाकाम हो चुकी है और सिर्फ वादों पे काम चल रहा है, अपनी पर्सनल चीज़ों पे काम चल रहा है, लेकिन आवाम की बात नहीं हो रही है। आज हमारा सबका सर फ़ख्र से बहुत बुलंद है क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम एक मज़बूत अवाम है, उसमें हौसला है, उसमें जज्बा है, उसमें उमंग है आगे बढ़ने की, हासिल करने की, तरक्की करने की, लेकिन बिकॉज कोई सही लीडरशिप नहीं है तो हमारी जो कौम है जस्ट लाइक ए लूज़ कैनन, एक बहुत लूज़ तोप है जो इधर उधर फायर करती है, कहीं निशाने पे कोई चीज़ जा नहीं रही है। लेकिन ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया कि वो हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के अहल हैं और कामयाबी को छू सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शर्मीन उबैद चुनाए एक मिसाल है पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कि कहाँ से कहाँ बात पहुँच सकती है। एक तरफ इंडिया है, हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ है और एक तरफ पाकिस्तान की दम तोड़ती, मरती हुई, गिरती हुई फिल्म इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ तो दहशतगर्दी को फ़रोग हो रहा है, हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ टोपियाँ बन रही हैं, ग्रीन, सब, नीली, पीली, ये तरक्की हो रही है हमारे यहाँ और कुछ तरक्की नहीं हो रही है। हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, गैस नहीं है, कैसे कपड़ा बनेगा, कैसे गारमेंट बनेगी, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान
एक मुल्क है, और वो मुल्क है जहाँ पे बहुत ही एक होशमंद आवाम तो है, लेकिन उनकी लीडरशिप नहीं है। काश के पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप मिले और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन करे। और आज मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा है, पूरी आवाम का सर जो है फ़ख्र से ऊंचा है कि शर्मील उबैद चनवाई ने ऑस्कर अवार्ड जीत के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान हर चीज़ की अहल है और कामयाबी हासिल कर सकती है हर फील्ड के अंदर। अब हमें देखना यह है कि हम इस मिसाल को कैसे लेते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें पास हो रही हैं और करारदादें पेश की जा रही हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ लिबरल ताकतें भी हैं, कुछ ऐसी क़ुव्वतें भी हैं जो अच्छी चीज़ों को पसंद करती हैं, अच्छी चीज़ों को सराहती हैं। तो हमें वो पहलू देखना चाहिए। हमें एंटी अमेरिका हो के कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अमेरिका से फ़ायदे उठाने हैं, अमेरिका की इकॉनमी से, अमेरिका की एजुकेशन से, या की रिसर्च से। तो हमें अब होशमंद आवाम की तरह आगे बढ़ना होगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक पैगाम है पूरे पाकिस्तान के लिए, इस ऑस्कर अवार्ड के लिए, कि पाकिस्तान ने तारीख का पहला अवार्ड जीता, पहली बार नॉमिनेशन हुई और पहली बार उसमें कामयाबी हासिल कर ली। तो मैं एक बार भरपूर तरीके से तमाम पाकिस्तानियों को जो अमेरिका में, कनाडा में आबाद हैं, मुबारकबाद देता हूँ, और पाकिस्तान में जो लोग आबाद हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो साबित कदम रहें और अच्छी लीडरशिप को मंतखब करें। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी को, जो भी पार्टी समझते हैं कि वो बेहतर है उनके लिए और वाकई उनको कुछ डिलीवर कर सकती है, तो आने वाले इलेक्शन में आप ख्याल से काम करें, ताकि अब आपके पास वक्त नहीं है। मुख्तलिफ गद्दार लोग सर उठा रहे हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को मजबूत बना के एक आलमी क़ुव्वत बना के उसको उभार सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की कुछ हाईलाइट, उसके बाद आपके लिए चलेंगे मेन प्रोग्राम में। नाज़रीन, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया हॉलीवुड इंडस्ट्री का गढ़ है और यहाँ पे हर साल ऑस्कर अवार्ड की तकरीब होती है। जब मैंने खबर पढ़ी छोटी थी कि पाकिस्तानी फिल्मसाज को नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए, ये एक बहुत ही खुशी का लम्हा था और ये एक बहुत ही इमोशनल भी लम्हा था कि वाकई पाकिस्तान इस काबिल है कि ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट हो जाए। हम इंडिया की इंडस्ट्री को देखते हैं, हम उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं इस ह्यूज इंडस्ट्री को। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ कि वो नॉमिनेशन हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जीतने का भी एजाज़ हासिल कर लिया। तो अब जहां पाकिस्तान ने क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर में तरक्की हासिल की है और नाम कमाया है, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नाम कमा लिया है। और मैं समझता हूँ कि अब स्क्रीन, टेलीविज़न, फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जहत मिलेगी और एक नया मौका मिलेगा उभरने का, आगे बढ़ने का। आइए देखते हैं कुछ झलकियां, कुछ मुलाकातें। कौंसल जनरल रिफत मसूद ने शर्मीन उबैद के एजाज़ में एक अशाया दिया था, जिसमें डॉक्टर जवाद, जो डाउ मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील हैं और बड़े प्राउड डाउ हाइट्स हैं, बड़ा उनको गुरूर है डाउ से डिग्री हासिल करने का। और कहते हैं कि डाउ ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने दुनिया में नाम कमाया। तो डॉक्टर जवाद ने जो है कलीदी किरदार अदा किया है इसमें, एज ए प्लास्टिक सर्जन, यूके से उनका ताल्लुक है। उनसे एक मुलाकात है, डैनियल से मुलाकात हुई है, उसने अपने ख्याल को इजहार किया है और हमने कुछ पाकिस्तानियों के भी ख्याल दिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, सेविंग द फेस। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline.
नाज़रीन, अमेरिका कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी खातून प्रोड्यूसर ने पाकिस्तान को ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले मुल्क में शामिल कर दिया। ये बात हैरतकुन है, जबकि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पेश की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लिबरल ताकतें हैं जो इन चीज़ों को रद्द करती हैं। ये मिसाल कोडिंग सेंटर में होने वाली ऑस्कर अवार्ड की तकरीब में पाकिस्तानी निजात प्रोड्यूसर शर्मीन उबैद चेनाव को ऑस्कर अवार्ड जीतकर पाकिस्तान को जीतने वालों में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में औरतों पर तेजाब फेंककर उनकी जिंदगी को तबाह करने वाले के बारे में 40 मिनट पर मबनी फिल्म सेव द फेस में मरकजी किरदार डॉक्टर जवाद का था, जो प्लास्टिक सर्जन है और यूके बेस्ड हैं। ये डॉमेडिकल कॉलेज से फारिग तहसील तालिब हैं और इन्होंने इस फिल्म में अहम और मरकजी किरदार अदा किया है, जो अपने प्रोफेशन में वेलफेयर और चैरिटी को फाके देते हैं। जियो लॉस एंजलिस से बातचीत करते हुए शर्मीन उबैद ने कहा, औरतों पे जो तेज़ाब का तशद्दुद होता है, वो मुझे जब मैं सुनती थी मैं सोचती थी ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब डैनियल ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि वो फिल्म बनाना चाहते हैं डॉक्टर मोहम्मद जवाद पर, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश थे और पाकिस्तान आके सर्जरीज करना चाहते थे, तो मैंने सोचा ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि एक फिल्म बनाई जाए जिसमें दिखाया जाए कि एक मसला है, मगर उस मसले पे लोग काम कर रहे हैं और उसका हल भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो दैट्स द रीजन। जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद औरतों के ऊपर तेजाब से होता है, मगर पाकिस्तानी लॉयर्स, पार्लियामेंटेरियंस, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि ये नहीं हो, और ये अहम बात है डॉक्यूमेंट करना। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इंटायर पाकिस्तान को? ये जो तेजाब फेंकने का सिलसिला है, इसका पे कोई कानून बनना चाहिए, और क्या कानून बन गया है तो आप क्या, आपके मैसेज क्या देना चाह रही हैं? मेरा मैसेज पाकिस्तानी कौम को ये होगा कि हमें, हमारे मुल्क में बहुत मसाइल है, मगर हमें उनको हल करना चाहिए और औरतों पे जो तशद्दुद होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बिकॉज इस्लाम में ख़वातीन को बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं। What's your feeling being a first nominee of the Oscar? पहली पाकिस्तानी ऑस्कर में नामजद होने पर मुझे बहुत खुशी है। पाकिस्तान पहली दफ़ा ऑस्कर रेड कारपेट पे रिप्रेजेंट होगा। मैं पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन के जाऊंगी। बहुत सारी कहानियां बची हैं पाकिस्तान में जो मैं बता सकती हूँ, और अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह हम यहाँ पहुँचेंगे। I want to dedicate this award to all the heroes working on the ground in Pakistan, including Dr. Mohammed Jawad, who's here with us today, the plastic surgeon working on rehabilitating all these women, Ruxana and Zakia, who are our main subjects of the film, whose resilience and bravery in the face of such adversity is admirable, and to all the women in Pakistan who are working for change. Don't give up on your dreams. This is for you. As Dr. Jawad pointed out, with the empowerment of women and with the empowerment of our entire society and with the growth of education, more and more people are coming out. I remember that such incidents would go unreported a few years ago. I mean, I remember it, where we would not like to talk about such issues. And other issues like honor killings or rapes even. You know, rape, I remember when I was in the 80s in Pakistan, adultery and rape, was intermingled. So these are issues which the courts, which the law are addressing. Of course, it's going to take time. Don't forget, Pakistan is a society which is in transition. We are a new democracy, and we are learning the ropes. And I think that that's why I support this project wholeheartedly, because I think it's films like this which make Pakistanis also aware of what's happening in the country, and then coming together to do something about it. And the beauty of this film is that it is Pakistanis working towards fixing a problem which they all understand. The point is that I think it is important that we all learn, and this is a learning process for us. And as Dr. Sab said, this is not a problem which is widespread in Pakistan. It is confined to certain areas where we have abject poverty, high rate of illiteracy, and but it's the strength of these women who are actually coming out and talking about these issues. So, kudos to both of you. I couldn't help but cry during the movie. It was definitely a heart-wrenching film, and
time, winning the Academy for this movie, it's such a proud moment for us as Pakistanis, and all I can say that we just saw the turnout of this event. It was just an amazing turnout for a weekday, Monday especially, and all this place is full of proud people. It's just an amazing job. Wonderful documentary. It puts Pakistan on the world map in a big way, and I'm very, very pleased that I actually know Dr. Jawad personally from my medical school days. So you think that this movie carrying a message? It does, absolutely, in a big way. And I think this is a subject that has been left undocumented and very poorly covered, generally speaking, for many years. And now these guys have done a fantastic job. I enjoyed watching the movie very much. I think it was inspirational. It was very motivating. And it highlighted a big problem in Pakistan and some great work that is being done to solve and address this issue. And it kind of helps other people and Pakistanis who live abroad to also come forward and participate in solving issues in Pakistan. I thought the message was that you can reconstruct your life no matter what happens to you under any circumstances. Don't you think it's a very sad incident taking place in Pakistan? Well, I think it's sad anywhere where people, do these kinds of things, not necessarily just in Pakistan. Yeah, as a fellow filmmaker, first of all, congratulations to Pakistan on its first Oscar. And I think it's a very brave film with a very, very important subject. And I'm hoping that, the people responsible respond to it. First, watch it, respond to it, spread the message, and own the problem and address it. I think something that was great that Muhammad Ali Jawad, doctor, said is that our biggest problem is that we don't accept the problem. And I think the first step is that we are accepting the problem as a society. I mean, with the recent law passed. So let's hope, inshallah, it's put to work. It's an amazing documentary. It's very timely, and they just raised a wonderful issue and very well made. We are extremely proud of Sharmeen. She has done a wonderful job, and we are all very proud. She's done an excellent work, and more than that, she got recognized for it. She's not only done the excellent work, but she got recognized for it, and this should be good for her and good for Pakistan. ये मैंने तो आज पहली दफ़ा देखी उर्दू में बोलूँ तो बहुत ज़बरदस्त और बड़ी पावरफुल डॉक्यूमेंट्री मुझे लगी कि कुछ लोगों ने ये बात उठाई जैसे ब्लॉग्स पे ईमेल्स में कि ये बड़ा नेगेटिव पार्ट ऑफ पाकिस्तान हम दिखा रहे हैं लेकिन देखिए अगर हम एक चीज़ पे पर्दा डालते रहेंगे तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होएगी तो जब तक एक चीज़ को हम मानेंगे नहीं कि हाँ ये हो रहा है और फिर कहेंगे कि ये गलत हो रहा है और हम इसको खुद ठीक करेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना तो वो चीज़ हम मान रहे हैं और हम उसको खुद ठीक कर रहे हैं इसमें ये भी दिखाया गया कि पॉजिटिवली क्या कर रहे हैं अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान ने पहली बार ये ऑस्कर अवार्ड विन किया है उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग है कल जब वो हुआ ना तो मैं अलग कमरे में जाके खूब रोई इतना मुझे रोना आया और मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे कि इसको अम्मा को क्या हुआ है बहुत इमोशनल हमें तो ये लग रहा था मुझे और मेरे मियाँ को कि शायद शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे ही नहीं या उनको पहले से फारिग कर दिया होगा या कुछ मतलब हमें एक सेंस था कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को अवार्ड मिले पाकिस्तान का नाम ही आए हमारे ख्याल में तो नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी चीज़ थी अवार्ड तो एक बियॉन्ड ये ना आपने देखा आज हॉल कितना भरा हुआ था मेरा नहीं ख्याल था कि हमें अवार्ड मिलेगा वरना हम बहुत बड़ा हॉल का इंतज़ाम करते तो हमने इतना हॉल का इंतज़ाम किया था कि शर्मिंदगी ना हो कि खाली खाली ना लगे आई थिंक वी मैनेज टू शो कि हमने एक अच्छा काम किया है ठीक है एंड हमने पाकिस्तानियों ने मिलकर काम किया है पाकिस्तानियों ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है ओन किया है और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलराइट लकीली ये प्रॉब्लम जो है ये लोकलाइज है इट्स नॉट अ नेशनल कैरेक्टर ऑफ अस हमें बहुत सारी बुराइयां हैं आई एक्सेप्ट वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट
ये हम में से नहीं, ये बुराई I can definitely, मुझे तो पता ही नहीं था इस बुराई का. दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि after winning this Oscar award, you give a new life to the Pakistan film industry and television screen. What is views about that? मैंने कुछ नहीं किया यार, ये तो आप शर्मीन के लिए कहें, शर्मीन ने किया है, you know. Part of that. देखें, मैं तो हमेशा से पार्ट था. Main character. ना यार, मैं तो काम कर रहा था, पर जिस हिसाब से उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है ना, that is a कमाल. Okay, so she has to be given a huge credit for it. I mean, I do what I do. Okay, but how you present that is a craftsmanship, and for which she and Daniel, I think, gets a full credit. And how do you feel about the people of California, Los Angeles? I love them, man. They're very good. I think they were very receptive, and I'm very honored to be here. And this is a very prestigious place. What do you guys say about GeoTV and Dr. Saab? Dr. Javad, I've already spoken with him, and I've told him he's an inspiration to upcoming physicians. The passion he has and the enthusiasm, you're instilling it in us. And I think Pakistan ke liye, it's a big honor to have something done positively about a very negative situation that they have recognized it. Allah ka fazl hai ki Hollywood ne recognize kiya, and it's an international platform. The outcome of this exposure is going to be a recognition of the problem in Pakistan and correction of the problem, prevention of the problem. And as you know, legislation has been passed to support this, to consider it a crime and consider it a crime punishable by life imprisonment. And I think that it deserves it. So I'm very happy that this has happened. I'm happy for my friend Muhammad Ali Jawad, who has worked very hard. Class fellow? He's a couple of years senior to me, but he's a wonderful friend. We go back in time. Muhammad Ali is my mentor, and he and I started training together in Cork in Ireland in 1990. I think it's very inspiring. I appreciate films like this because they inspire people like us, young people who are in college, like looking to make something out of ourselves, to do something good. So I appreciate work like this. It was a pleasure being here today. Actually, it was a movie that we really enjoyed. I think it was a positive message from the movie as a physician or also as a Pakistani individual. So I got a message twice, a much stronger message than probably a lot of other people who are either non-physicians or non-Pakistanis. So a really strong message. It was a very worthy cause, and it was a very heartfelt topic for all Pakistanis, especially women, especially the areas where all this has happened. I'm so happy, and I'm so glad to hear that someone took up this subject and brought it to everyone's attention. And receiving an Oscar for a Pakistani, and to have the exposure of a Pakistani lady in a positive light, and for Pakistan to be in a positive role, I think it's just amazing. We have to congratulate ourselves, and we have to support this cause and support these people. Here is Daniel Jung, and he is a winner of the Oscar Award. It's a great history-making situation for the entire Pakistani nation in Pakistan, because it gave a new life of the film industry and the TV screen. It's a small, short story, but it's amazing, very effective, and it's carrying the message. So, Daniel, I would like to have your opinion about, I know that you were nominated as a great thing for Pakistan, first ever. Now you've won the awards. So what's your feeling about now? Oh, I feel wonderful. This is the greatest accolade in our business. But, you know, who I feel even better for is my co-director Sharmeen Obaid Chinoy. The fact that this is the first director from Pakistan to win an Oscar, I mean, my hat goes off to her. It really is an accomplishment. So what's your next step now? Where are you going now after that? Well, the film will now find an audience first in North America, then in the United Kingdom. We would like to show the film eventually in Pakistan, but before we do that, we need to be assured of all the women's safety. The last thing we can have is to show the film there and endanger anyone. Are you going to produce the documentary in different languages? Well, I've made films all around the world. Okay. So why have specific subject? There's so many issues in Pakistan. Well, sure. I mean, there's so many issues in Pakistan. There's so many issues here in my
my own country in the United States. There's many difficult issues in the world to tackle, but this one I felt was incredibly important, and I also had a way to tell this story because I met Dr. Mohammed Jawad, and I thought this is an incredible man doing incredible work, and through him I met so many other incredible Pakistanis. Sharmeen is amazing. Great part. She's the best. Oh, how did I find her? I looked for Pakistan's best filmmaker. Oh, really? So did you your first award, or you have won some other awards? I've won numerous awards. I've been nominated for the Oscar before, but this is my first time winning. Okay. Do you have any exclusive message to the nation of Pakistan, which is a very, after so many resolutions passing in Washington DC, sure, so many anti-Muslim, anti-Pakistani slogans, this is a new life, a new smile on the faces of the Pakistani nation in Pakistan. So what's your exclusive message to the nation? The most important thing I can say is that this film is about Pakistanis addressing a Pakistani problem, and it's documented by a Pakistani film crew and by a Pakistani director in Sharmeen. That's important. This is not simply some kind of expose from people outside. This is a film about solutions, and it's made by Pakistanis. This is the symbol of the Pakistani success. ये एक निशान है जो पाकिस्तान की आने वाली फिल्मों के लिए कामयाबी की मशाल राह बनेगा और टीवी स्क्रीन को एक नई जिंदगी देगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर भी इसी किस्म की डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करें जिससे हमारी नेशन की जो है वो एक नसीहत हो और उनको एक सबक मिले। नाज़रीन, आज यहाँ पर जो है सेविंग द फेस फिल्म दिखाई गई जो कि शॉर्ट स्टोरी थी 40 मिनट की, लेकिन एक नहायत ही पावरफुल स्टोरी थी जिसको शर्मीन उबैद चिनाव ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया। उनके को प्रोड्यूसर भी डैनियल भी मौजूद थे और डॉक्टर जवाद जो उसके मेन कैरेक्टर थे वो भी मौजूद थे। आज यहाँ पे हालांकि मंडे है लेकिन तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत रखेगी। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान पहली बार ऑस्कर में नॉमिनेट हुआ और पहली बार उन्होंने ऑस्कर का अवार्ड जो है वो जीत के पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद कर दिया है और ये एक खुसूसी मैसेज कैरी कर रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में औरतों पे जुल्म बंद किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान इस पे सख्ती से अमल करे कानून साजी पे ताकि उन लोगों को सजाएं दी जा सकें। और उनका यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि हमें बेइंतहा खुशी है कि बहुत दिनों बाद बहुत से हालात पाकिस्तान के बदल रहे हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबत है, लोड शेडिंग है। हमने पहली बार पाकिस्तानियों के चेहरों पे एक स्माइल और खुशी की लहर देखी है। कैमरामैन जैसन के साथ वकील खान, जी न्यूज़, लॉस एंजल्स। नाज़रीन, आप जैसा जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एंटी इस्लाम भी हैं और एंटी पाकिस्तान भी है, लेकिन हमें सब्र का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए और हमें उन मुखालिफ क़ुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम मेन स्ट्रीम में रहें, अपने ताल्लुकात अच्छे रखें और अपना व्यू पॉइंट बयान करें। ठीक है, किसी को एक्सेप्ट करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। हाल ही में कुछ ऐसी अफवाहें हो रही थी कि जनाब कुछ मुसलमानों का एक ग्रुप है कि वो चाहता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो और यहाँ पे इस्लामी शरिया नफाज हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन है। यहाँ का कानून पहले ही बहुत बेहतर और आला है और इंसाफ देता है। तो इस सिलसिले में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स ने एक मीटिंग रखी, एक टाउन हॉल मीटिंग रखी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ऑरेंज काउंटी, इज़ वेरी ह्यूज मॉस्क, वन ऑफ द लीडिंग मॉस्क इन सदर्न कैलिफोर्निया, मे बी इन द नेशन वाइड। और वहाँ पे ऑफ कोर्स डॉक्टर मुज़म्मिल सिद्दीकी जी स्कॉलर वो उसमें मौजूद थे। इसके अलावा US अटॉर्नी, FBI, LAPD, शेरिफ डिपार्टमेंट, कांग्रेस वुमेन, सेनेटर, सब ने शिरकत की और लोगों की बड़ी तादाद आई और ये कोपा का एक बहुत बड़ा सक्सेस था। और मैं जनाब उनके जो सदर हैं अदनान खान, उनको मुबारकबाद देता हूँ ऐसा बेहतरीन और कोऑर्डिनेटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो आइए देखते हैं उस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। नाज़रीन, अमेरिका में इस्लाम मुखालफाना रुझान बढ़ता जा रहा है, खुसूसन इस्लामिक शरिया आजकल हर जगह ज़ेर बहस है। 13 से ज़्यादा स्टेट में तहरीक और शरिया नफाज को बैन करने और सजा तजवीज़ करने पर भी गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी और खुसूसन इस्लामिक कम्युनिटी में तशवीश की लहर पाई जाती है। इस सिलसिले में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन अफेयर्स कोपा और इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ऑरेंज काउंटी ने
टाउन हॉल मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। याद रहे, अमेरिका में आबाद मुसलमान काफी अहमियत के हामिल हैं और आने वाले इलेक्शन में कलीदी किरदार भी अदा करेंगे। टाउन हॉल मीटिंग में यूएस अटॉर्नी, होमलैंड सिक्योरिटी, कांग्रेसमैन, सेनेटर की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी राय का इजहार किया। What is proven to be a most salient discussion of the U.S. Constitution and the Sharia. Today's program will be brief, as we'll follow a strict schedule to accommodate our honorary guests and speakers. Assalamu alaikum and good afternoon. On behalf of COPAA, Council of Pakistan American Affairs, and ISOC, the Islamic Society of Orange County, I would like to welcome you all to our town hall meeting. As we all are excited to be here this afternoon, it is an honor and pleasure to be surrounded by such a powerhouse of officials and leaders from different organizations and religious institutions. Our today's topic is Islamic Sharia and the U.S. Constitution. Without further delay, I would like to request the President of COPAA, Mr. Adnan Khan, to please come up and say a few words. There has been a propaganda war on the Muslims that they want to replace the United States Constitution with the Sharia law. How serious is this? Well, Oklahoma legislature have passed a law against the Sharia law. After Oklahoma, guess how many other states have spent their time doing so? Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Indiana, Louisiana, Nebraska, South Carolina, Texas, South Dakota, Virginia, and Wyoming. The debate goes on in many other state capitals. Muslims in the United States and North America, for guidance and advice, they turn to Dr. Muzammil Siddiqui. But today, the Muslims of America are looking at Orange County and the Garden Grove Mosque for what Dr. Muzammil Siddiqui will be addressing the Muslims. Today also, we have to remember that February 19th is an important day in the United States. The reason it is important is because President Roosevelt, on February 19th, 1942, sent the Japanese Americans, our brothers and sisters, to camps. We stand in solidarity with our brothers of the Japanese descent and sisters that this never repeats again in the United States, that no minority, no people of any race or color, their constitutional rights are taken away or their civil rights are taken away. He has been the president of the Islamic Society of North America, ISNA. Dr. Siddiqui holds a PhD in comparative religion from Harvard University and is currently a professor of Islamic studies at Chapman University. It is very important for our officials, especially elected officials, to communicate with all citizens and should not allow prejudice and hate against any group. Our country is the country of laws and rules, and we must treat all people with justice. Muslim community, unfortunately, is becoming a target of prejudice and propaganda. Misinformed and hateful statements about our religion, our mosques, and our people in general are increasing. Like other faith communities in the US and elsewhere, we see no inherent conflict between the normative values of Islam and the US Constitution and Bill of Rights. Contrary to erroneous perceptions and Islamophobic propaganda of political extremists from various backgrounds, the true and authentic teachings of Islam promote the security of human life, dignity of all humans, and respect of human, civil, and political rights. Islamic teachings uphold religious freedom and adherence to the same universal moral values which are accepted by the majority of people of all backgrounds and upon which the US Constitution was established and according to which the Bill of Rights was enunciated. As a body of Islamic scholars, we, the members of Church Council of North America, believe that it is false and misleading to suggest there is a contradiction between being a faithful Muslim committed to God and being loyal American citizen. Islamic teachings require respect of the laws of the land where Muslims live as minorities, including the Constitution and the Bill of Rights, so long as there is no conflict with Muslims' obligation for obedience to God.
We do not see any such conflict with the U.S. Constitution. In introducing him, Andre is in charge of the second largest attorney office with jurisdiction over 18 million residents throughout Southern California. In recent times, Andre took part in the doping case of Lance Armstrong. Andre? I'm thrilled to have the opportunity today to talk with you briefly about our constitutional form of government. And I do believe, indeed, this town hall forum is actually a great forum in which we can do that, because it is a great demonstration of our tradition of freedom of speech and open debate. Participating in a forum of this nature is a collective demonstration, in my mind, of our commitment and our dedication to our constitutional form of government. And an essential part of that commitment is our dedication and the advancement of all civil rights and civil liberties for all Americans. And I mean equality for all Americans, regardless of race, creed, color, or nationality. Because I firmly believe that when civil rights and civil liberties that are guaranteed by the Constitution, including the freedom of worship and the freedom to associate, are observed and enforced equally and fairly, then we as an American society benefit as a whole. And conversely, I must also note that when civil rights and civil liberties of any Americans, and I mean any Americans, including Muslim Americans, are violated, then we all indeed do suffer. And that is truly unfortunate. Now, to me, those are really the declaration, if you will, of constitutional principles. First principles, if you will. And I hope and I trust that we all share that view here this afternoon. These first principles are also the fundamental first principles of this great nation. Indeed, this county was founded on the bedrock of constitutional principles like freedom of religion, freedom of speech, freedom to assemble, and those are all principles that we need to reaffirm with every generation of Americans. He is the commanding officer of the Counterterrorism and Special Operations Bureau, Chief Michael Dowling. There's a recognition that the United States Constitution is the supreme law of the land, and that recognition is through the principle of Sharia. And Sharia is not a threat to America. What is a threat to America is violent, ideological extremists. Just as we protect the sacred texts of our faith communities, so we must put great effort in protecting the sacred texts of our country. In at least 13 states where lawmakers are now considering the adoption of legislation forbidding Sharia. A bill in the Tennessee State Senate, for example, would make adherence to Sharia punishable. We need to increase understanding and engagement with Muslim American communities to keep the entire country safe and secure. Understanding domestic terrorism is a legitimate concern for Congress, and we all have to be alert to violent extremism. However, these concerns must be measured against our Constitution and the civil rights protections and religious freedom it affords all Americans. Last year, he was in one of the hearing committee at the Congress where he defended Muslim Americans single-handedly. Los Angeles is the epicenter of diversity, bar no other place in the world. With 11 million people here, we have a special obligation to be the example for the rest of the nation, and I believe we are. I think that you'll find in the scope of how we look at our problems here is that we try to be as neighborly as we can be. In the educational process of understanding another race or another religion or another ethnicity, and even those who have language skills that are more diverse than, say, mine, since I only know how to speak one, and I'm terrible with my Spanish. But the key to my point is there has to be diplomacy as a primary mission of all Americans. If you don't know someone and you have fears about someone for whatever your reasons are, I believe that the calling for all Americans is to reach out to who you fear and who you don't know and engage in a sensible dialogue so you can understand what your thoughts are in a more intellectual and accurate way. And so there's a lot of education to be done. I want to commend Secretary Janet Napolitano
working directly as a member of the cabinet for President Obama, for her effort to form an interfaith part of her advisory council, of which I'm a part of. I'm the co-chair of the Religious Interfaith Council for her department. And in that respect, we have a greater obligation to plan, to speak forwardly to the American public, that all of our faiths have a role to play in keeping America safe. And when one religion is at threat, all religions are at threat. Even she's a Consul General of Pakistan. She just doesn't represent only Pakistani Muslim community, but she represents Muslim community at large. So please welcome her. When I went to Jefferson Memorial, and as I was going through Jefferson's work very briefly and reading the inscriptions on the wall of the memorial, I felt both happy and sad. In fact, I had goosebumps on my body as I was reading them. Because as I was reading those inscriptions, I thought, these are actually things that I've read about when I was studying Islam. When I was reading the Quran, it seems as if some of the concepts that Jefferson is talking about are the very same ones that Muslims have grown up with. But then, where are we today? Today, we are far from what Mr. Jefferson talked about. We are far from what the American Constitution is talking about. So we have to really put our heads and minds together of where this gap and where this difference is coming to our communities, which has bred so much hatred amongst us. And go back to the ideals. You as Americans have got all those founding fathers, you have your Constitution in front of you to give you the path. And then to marry that with what the Islamic teachings and Islamic principles are. Congresswoman Loretta Sanchez is the most senior female member of the House Committee on Homeland Security, where she served since its inception and has emerged as an expert on counterterrorism issues. As a member of the Subcommittee on Border and Maritime Security, she makes decisions relevant to securing our nation's land and sea borders and tracking national security threats. She believes that security can be achieved without compromising America's core civil liberties. Congresswoman Loretta Sanchez. Are incredibly important for us, and I want to thank the Islamic Society of Orange County, again in my district, and really is one of the gathering areas for what is considered the second largest Arab and or Muslim community in the United States. So thank you for again, Dr. Siddiqui. My greatest concern has been the consequences of racial profiling, and so I've been working hard to fight racial profiling, not only in this community, but in many communities. My parents are Mexican. I was born here in the United States, right here in California, and yet I see the profiling that happens, even to someone like me. So I, along with other members of Congress, have co-signed a letter that called on President Obama to appoint qualified individuals to the Privacy and Civil Liberties Oversight Board. That board is an independent executive branch agency that assists our president and our other senior executive branch officials in ensuring that concerns with respect to privacy and civil liberties are upheld, are looked at. The Oversight Board will consider and examine the implementation of all laws, all regulations, and executive branch policies related to preventing terrorism. So we want to be able to prevent terrorism, but at what cost? Where is that break-even point? And this Oversight Board will work to ensure that as a nation, we really don't go overboard with respect to that. And we have to continue to set benchmarks, and we have to continue to move forward, and we have to continue to look at these things and to draw a line against disrespectful actions and dialogues, such as the current chairman of our Homeland Security Committee, Republican Peter Payne, and his Muslim hearings. Those hearings, and believe me, I have sat through them, those hearings have but one purpose: to humiliate and to offend the cultural integrity
of the American Muslim community. We are proud of the fact that we have 40 members strong, and if you combine the Congressional Asian Pacific Caucus with the Congressional Black Caucus and the Congressional Hispanic Caucus, we actually make up 40% of the Democratic members of the House of Representatives, which is a pretty important thing. And when Attorney General Eric Holder came before the House Judiciary Committee, I had to ask him about these terrible FBI counterterrorism training manuals that they had been using. In these manuals, they had statements like, Islam is a highly violent radical religion, and statements like the Arabic mind is swayed more by ideas than fact. So I said, why is it that the FBI is using these training manuals with offensive Muslim stereotypes, and what are you doing about that? And you know what he said? He said, we are no longer using those manuals, and those persons that put those manuals into place are no longer with the department. My name is Barkat Ali Basaria, and I am the president of PSNT on behalf of Pakistan Society of North Texas and its board of directors. I would like to humbly invite all our Pakistani brothers and sisters to attend Pakistan Day event on April 7th and to support our own organization. Thank you. PSNT ने न सिर्फ आपके लिए मज़ेदार खाने का एहतमाम किया है, बल्कि आपकी रूह को ग़िज़ा मुहैया करने के लिए ज़हीर अब्बास सारे गामा पा कंटेस्टेंट को भी मदऊ किया है। तशरीफ लाकर पाकिस्तान डे की खुशियों को दुबाला कीजिए। शुक्रिया। Advanced Microsystems, one of the largest authorized Apple sales and service centers in Southern California, invites you to visit our store for everyday low prices. We carry a complete line of Apple products, including iPods, iPads, laptops, and desktops. We also offer a huge inventory of third-party accessories. Our service department offers the quickest turnaround time for all Apple product repairs, upgrades, and data recovery, including Apple Care servicing, all without an appointment. Find us on the corner of Hawthorne Boulevard and Emerald Street in Torrance. My name is Dr. Sohail Masood. I'm the founder and CEO of COPAA Fusion. It's a home infusion pharmacy with offices in New Jersey and California. We provide intravenous immune globulin to patients at home. We have our own nurses who go and deliver the drugs to the patients. The reason we started the company was that we found out there was a lot of unhappiness on part of patients receiving those infusion services at home. So we decided to start the company again. Originally, I started Crescent Healthcare Inc.
in Anaheim, California. So now this new company will be pretty much providing the same kind of services, but the focus will be the best patient care possible. Immunoglobulin is a drug which is used in various neuromuscular disorders and also for skin disorders. Our New Jersey office is in a city called Edison, and that office provides services to New Jersey, New York, Pennsylvania, and Massachusetts. And from that office we do all kind of services, not just immunoglobulin, but also TPN, which is a parenteral nutrition, IV antibiotics, injectables, enteral feeding, and various kinds of cancer drugs. We have a full line of nurses who go out to patients' homes and provide those services. We take all kind of insurance plans and bill insurance companies on patients' behalf. Our California. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान की 8वीं अवार्ड नाइट डैलस में हो रही है बड़ी धूमधाम से। इस प्रोग्राम में हम बहुत ही यूनिक तरीके से एक म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा पेश कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ सिंगर आएंगे और मुख्तलिफ गाने गाएंगे, मुख्तलिफ पुराने नए गानों को पेश करेंगे आपके लिए। इसके अलावा पूरे अमेरिका से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें अवार्ड लेने आ रहे हैं, और वो हुनर लोग जिन्होंने कुछ वाकई तरक्की की है अपने शोबों में, मुख्तलिफ शोबों में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप समझते हैं आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं अमेरिका की किसी भी रियासत से, तो सफ़ीर पाकिस्तान से रब्ता कायम करें, और ऑफकोर्स डैलस की जो इंतज़ामिया है उनसे भी रब्ता कायम करें। ये प्रोग्राम 19 मई को डैलस में मैरियट होटल में होना करार पाया है और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, और ये एक यूनिक प्रोग्राम होगा। ये पहली बार हम अपने शहर लॉस एंजल्स से बाहर निकलें और हम देखते हैं कि डैलस की आवाम, टेक्सास की आवाम हमसे कितना ताउन करती है और इस प्रोग्राम को किस तरीके से कामयाबी से हम किनार करती है। तो स्टे ट्यून नाज़रीन। तो ये थी आज की मुलाकात और आज की बातें, लेकिन आप समझते हैं कि आपके पास कोई नया आइडिया है, सफ़ीर पाकिस्तान से रब्ता कायम कीजिए। और वैसे भी हम नुमाइंदे देख रहे हैं, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सफ़ीर पाकिस्तान। हमारा नंबर देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है, हमसे हेजिटेट ना करें, अपने आइडियाज़ को ज़रूर एक्सचेंज करें। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।